Welcome back, students. So, now we are finally on the very end portion of this chapter, place value. This is the last section of this chapter, rounding off numbers. So, before we go into how do we round the numbers, can you think of the instances or examples where do we really use rounding off numbers? Or why do we round off numbers? Let us see. But let us first see what are these two friends talking about. Hey Vani, I saw the match in stadium yesterday. The crowd was crazy. 5,000 people had gathered to watch the match. But how did you know that there were 5,000 people? I read somewhere that there were 5,003 people in the ground. Oh, I rounded off the value 5,003 to nearest 10 and said 5,000. But I still don't understand what this rounding of a number to nearest 10 means. So we see here that Aman was sharing his experience of watching a match in the stadium. And when he stated that how many people had watched the match in stadium, instead of saying accurately 5,003, he used a rounded figure 5,000. So can you think of why did he actually use 5,000 or how did he reach this value 5,000? Let us see another example to understand that why do we round off digits. Suppose Anna is organizing a party at her place. What all things would she need to estimate? If you also have to plan a party for a few friends at your house, you would need to estimate some things to arrange a party. You would need to estimated amount of some food or snacks. You would need some decorative items like balloons and cats. Also, you would need some estimated quantity of money. So you see, when you're planning a party for your friends, you need some quantities in some estimated amount. That means हम एक अंदाजे से कि how many friends are attending our party, अंदाजे से ये सारी चीजें अरेंज करते हैं. It's not that ना कि हम we order a lot of food for our friends or we order very less food for our friends. We do it accordingly to how many friends are attending our party, जो सिर्फ एक अंदाजा होता है because sometimes we don't know how many friends are coming or how much food will exactly be used. So you see these are some small instances or examples where we use the estimated quantity or rounded off value in a real life. You can also think of many examples. Suppose you have to prepare 5 chapters in a day for a test tomorrow. So you will plan out your schedule like okay, one chapter would need 2 hours, second chapter would need 3 hours. So you see you take an estimated value. जरूरी नहीं है कि आपको वो चैप्टर को याद करने में एग्जैक्टली 2 आवर्स लगे या 3 आवर्स लगे, बट अंदाजे से तो वी कैन टेक ना कि 2 आवर्स या 3 आवर्स लगेंगे. So these are some examples where we actually use the rounded off digits in our real life. So now the quantity in which Anna ordered the things might not be used in exact amount. It might be less or more than the exact quantity used, but taking an estimated value gives an idea of the situation. Can you list examples wherein you estimate a value or round off a quantity? So now in this section, we will learn how to round off a digit to nearest 10, rounding off to nearest 100 and rounding off to nearest 1000. So first is how do we round off a digit to nearest 10? मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन में आता है कि आपके पास एक नंबर है and you have to round it off to nearest 10, what all step would we follow? Always remember, look at the digit at ones place of the given number. If the digit at ones place is less than 5, then replace the ones digit by 0 and keep all other digits of the number as they are. If the digit at ones place is 5 or greater than 5, then increase the digit at tens place by 1 and replace the digit at ones place by 0. मतलब अगर आपके पास एक नंबर है,
Okay, it doesn't matter if it is 2 digit number, 3 digit number or 4 digit number or more than it. हमें नियरेस्ट 10 करना है तो वी विल ऑलवेज लुक फॉर आर वंस प्लेस. वंस प्लेस में अगर वैल्यू इज लेस देन 5 तो हम क्या करेंगे, उस वंस प्लेस को तो हम 0 कर देंगे एंड बाकी नंबर विल रिमेन एज इट इज. बट इफ द वंस प्लेस हैज अ नंबर 5 or more than 5, then again we will replace the ones place by 0, but उससे immediate left में जो भी आपकी वैल्यू होगी टेंथ प्लेस वाली, it will increase by 1. ठीक है, let us see this through an example. Suppose we have to round off 63 to nearest 10. Now you see the digit at ones place is 3. अब हमें पता है that 3 is less than 5. 3 अगर लेस देन 5 है तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे कि वंस प्लेस पे जो हमारा 3 है वो 0 हो जाएगा, बाकी आपका नंबर एज इट इज रहेगा. सो आवर नंबर बिकम्स 60. ठीक है, ऑल्सो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस दैट 63 आपका 60 के ज़्यादा क्लोज है, तो सिंपली आपका 63 60 में राउंड ऑफ हो जाएगा. But if we have to round off 128 to nearest 10, now again I will repeat, it doesn't matter कि अगर वो once 3 digit number है, 2 digit number है या 5 digit number है, हम nearest 10 के लिए हमेशा ones place को देखना है. So ones place पे what number do we have? It is 8. Now 8 is greater than 5. We have a situation जहाँ पे our digit is more than 5. So what we will do? We will replace that ones digit by 0 and increase the tens place by 1. ठीक है, अब हमने ऐसा नहीं करा कि बाकी नंबर एज इट इज रहने दिया, we increase the tens place by 1. तो अगर 2 में 1 को 1 ऐड करें तो क्या आ जाता है 3. So our number becomes 130. ठीक है, also you can understand this that 128 is more near to 130. Rounding off number 1485 to nearest 10. Now the number at ones place is 5. So if a number at ones place is 5 or more than 5, we follow the same rule that replace the digit at ones place by 0 and increase the digit at tens place by 1. So increasing it by 1 becomes 9 and replacing 5 by 0, so our number becomes 1490. Okay, so 1485 is rounded off to 1490. ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 85 जो है आपकी 90 के ज़्यादा क्लोज है. So now we have rounding off to nearest 100. Now somehow our rules are same, but now when you have to round off to nearest 100, पहले क्या था कि once जब आपको नियरेस्ट 10 को करना था तो वी यूज टू सी वंस डिजिट. अब हमें नियरेस्ट 100 को करना है तो हम टेंथ प्लेस में देखेंगे नंबर. ठीक है, बाकी रूल्स एज इट इज सेम है. लेट अस सी थ्रू एग्जांपल. सी अगर हमें राउंड ऑफ करना है नंबर 1484 टू नियरेस्ट 100, so you see digit at tens place is 8. So now number is 8 which is greater than 5. So हम क्या करेंगे, we will replace the digit at ones place and tens place by 0 and increase the digit at hundreds place by 1. मतलब हमने वंस और टेंस प्लेस को 0 कर दिया और उससे पहले जो आपकी हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट थी उसको 1 से इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 1500 और वी कैन से 1500. So our next example is 128. Again we will look for a digit at tens place. ठीक है, टेंथ प्लेस पे what digit is there 2. 2 is less than 5. तो हम क्या करेंगे, जो आपकी वंस प्लेस पे और टेंथ प्लेस पे डिजिट्स हैं वी विल रिप्लेस इट बाय 0. बाकी योर नंबर विल रिमेन एज इट इज. सो 1 विल रिमेन एज इट इज, सो नंबर बिकम्स 100. ठीक है, सो 128 इज राउंडेड ऑफ टू 100. Now you see if you have to round off this 5 digit number 68,950 to nearest 100. Again हम 10th digit को देखेंगे. 10th digit पे your number is 5.
सो डिजिट एट टेंथ प्लेस इफ इट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो हमारा वही वाला रूल लगेगा कि वंस और टेंथ प्लेस पे जो आपके डिजिट्स हैं इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0, और इमीडिएट लेफ्ट पे या हंड्रेड्स प्लेस पर जो आपकी डिजिट है इट विल गेट इंक्रीज्ड बाय 1। तो हमारा वंस प्लेस पे जो 0 था वो 0 हो गया, टेंथ प्लेस पे जो 5 था वो 0 हो गया, अब हंड्रेड्स प्लेस पे जो 9 था इट विल गेट इंक्रीज्ड बाय 1। सो जब हम 9 को इंक्रीज करोगे 1 से, इट विल ऑल्सो अफेक्ट जो डिजिट उससे इमीडिएट लेफ्ट पे या उससे पहले है। तो 9 को जब हमने 1 से इंक्रीज करा तो 8 भी 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 8 को जब हमने 1 से इंक्रीज करा तो कितना हो जाएगा वो 9। सो आवर नंबर फाइनली बिकम्स 69000 which is 69,000। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल वाज गुड बिकॉज यहाँ पे आपने क्या नोटिस करा, जब आपने हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट थी उसको जब 1 से इंक्रीज करा इट ऑल्सो क्रिएटेड एन इफेक्ट ऑन द डिजिट्स विच वर लेफ्ट टू द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। Now rounding off to nearest thousand. Again same rules are there, but this time it is thousand. तो हम हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट के साथ सेम रूल्स फॉलो करेंगे कि अगर आपका डिजिट जो हंड्रेड्स प्लेस पर है इफ इट इज लेस देन 5, so all other digits at hundreds place, tens place and ones place will become 0. बाकी your number will remain as it is. And if the digit at hundreds place is 5 or greater than 5, so all the digits at hundreds place, tens place and ones place will be replaced by 0, and digit at thousands place will be increased by 1. अब इसमें let's see the example 68,372. So the digit at hundreds place is 3 which is less than 5. तो हमारा सिंपल रूल है कि जो वंस प्लेस पे, टेंथ प्लेस पर और हंड्रेड्स प्लेस पर डिजिट्स हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय 0 एंड बाकी योर नंबर विल रिमेन as it is. So our number becomes 68,000. Now our number is 68,500. So you see the digit at hundreds place is 5. So what we will do, the digit at ones place, tens place and hundreds place will be replaced by 0 and the digit at thousands place will be increased by 1. So ones place पे तो ऑलरेडी 0 है, tens place पे भी 0 है और आपका hundreds place पे जो 5 था it will now become 0 और जो thousands place पर 8 है it will be increased by 1. So our new number becomes 69,000. So our next example is 128. Again we will look for a digit at tens place, ठीक है। टेंथ प्लेस पे what digit is there 2. 2 is less than 5, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी वंस प्लेस पे और टेंथ प्लेस पे डिजिट्स हैं we will replace it by 0, बाकी your number will remain as it is. So 1 will remain as it is, so number becomes 100, ठीक है। So 128 is rounded off to 100. Now before we end this chapter, let's just attempt this last HOTS question which is given in your book. Which is the smallest 5-digit number that ends in 9 and reads the same way forward as it does backward? मतलब आपको एक ऐसा नंबर क्रिएट करना है which is smallest 5-digit number जिसमें कंडीशन ये है that it must end with 9 and it reads the same way as it forward as it does backward. मतलब आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो it reads in the same वे। तो आपके बैकवर्ड्स में तो आपके लास्ट प्लेस पर आ जाएगा 9 और स्टार्टिंग में भी आपको 9 ही लिखना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पे सो दैट इट रीड्स सेम वे और बाकी की 3 प्लेसेस पे वी विल फिल इट विद द स्मॉलेस्ट डिजिट वी हैव व्हिच इज 0. Okay, so our number will become 90,009. Also read the second question that I have given and try to attempt it. ठीक है, can you think of a greatest 5-digit number that ends in 1 and reads the same way forward as it does backwards? Now next I have the quiz. Just try, pause the video and check your understanding by attempting these questions. Okay, thank you.